शासन के तीनों स्तरों पर अपनी सेवाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू को 18 मई 2015 के दिन झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे उस अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी। श्रीमती मुर्मू ने जन सेवा के दौरान समाज के अति उपेक्षित वर्गों का उत्थान करने, महिला पुरुष में समानता लाने, जन सेवा सुलभ कराने और इसमें कार्यदक्षता लाने, स्थायी पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण करने तथा समावेशी, सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति भवन में And approaching from your right are the Su-30 aircraft, call sign Kirpan. They will target a terrorist camp which is located 12 o'clock. Bombs gone. Let's have a round of applause for our air warriors for this decisive strike. बिना समय व्यतीत किए आपको ले चलते हैं युद्ध के अगले पड़ाव पर। जिस प्रकार रावण के प्राण उसकी नाभि में स्थित थे, उसी प्रकार दुश्मन की शक्तियों का स्रोत उसके रेडार और कमांड कंट्रोल सेंटर होते हैं। आपने सप्रेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के माध्यम से अब हम उसी स्रोत को निशाना बनाएंगे। Before the first strike, we silence the eyes that see. What a hit! And these loitering munitions were successfully used during Operation Sindoor to attack critical targets behind the enemy line. Foiling loitering munition, fighter will enter into the battlefield from your left. Call sign Urumi. The target enemy radar cluster 11 o'clock 3 kilometers away. आप स्क्रीन पर देखेंगे गरुड़ टारगेट को लेजर डेजिग्नेट करेंगे। गरुड़ गाइडिंग फ्रॉम बिलो, जैगुआर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अबव। उरुमी अर्थात एक तलवार, लचीलापन और घातक गति का अद्वितीय संगम। Bomb has been released from your left and an accurate hit. The radar cluster has been neutralized, just like a true warrior who strikes swiftly without hesitation. With the destruction of this radar site, enemy surveillance and tracking have been effectively blinded. This creates an operational window allowing our forces to penetrate deep with reduced detection and execute strike with surprise and precision. अब शत्रु की वायु रक्षा प्रणालियों और कमांड नोड्स को खंडित करने के लिए दाहिनी ओर से आगे बढ़ रहा है Su-30 कॉल साइन खंडा। अरवल सरल बनावट में छिपी प्रचंड शक्ति साक्षात दर्शाता हुआ। There's nothing like some good air-to-air combat, yes? Well, if you second this thought, you are in for a treat. You are about to witness some air-to-air action. You will witness a glimpse of small aerial engagement, our fighters against theirs in a dogfight. The intruders have been detected by our integrated air surveillance and radar network. And coming from your right are the simulated enemy aircraft simulated by Jaguars. Call sign Zulfikar. And coming from behind, Su-30 is committed for a simulated attack. Call sign Phala. Look towards your front, the intruding aircraft. And from your right, coming in
body. And the enemy aircraft have been hit. Su-30 now dropping onto the simulated enemy aircraft. Look at that, Su-30 now escorting the enemies back to hell from whence they came. This sequence exemplifies a textbook combat air patrol engagement. Early detection, rapid interception, controlled escalation, and complete command of the airspace. Watch the Su-30 pitch up and reheat. शत्रु लंबी दूरी से हमले की रणनीति अपनाकर लगातार हमला कर रहा है और पीछे हटने को तैयार नहीं है, परंतु ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भली भांति आता है। These threats will now be engaged by our surface-to-air missile forces, a vital pillar of the Indian Air Force's multi-layered air defense architecture, Akash. For today's demonstration, the enemy aircraft will be simulated by a practice aerial target with red trail and will be visible on your right. This is our maneuverable expendable aerial target, also known as MEAT. आकाश मिसाइल सिस्टम भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मध्यम दूरी की सतह से वायु में वार करने वाली मोबाइल मिसाइल प्रणाली है। Now, ladies and gentlemen, watch closely as the Akash system to your 12 o'clock on ground will now execute a salvo launch, firing 2 missiles in rapid succession to ensure a high probability of target destruction of the practice aerial target, which will be approaching from your right. Keep looking straight ahead and brace yourself for the launch. And that's a direct hit. Just a single launch was enough to take down the enemy. It's a huge round of applause for our Akash system. Despite this, the adversary continues a desperate attempt to target our vital installations. Now entering the engagement zone is our Spider surface-to-air missile system, also known as Saksham. This highly capable system can track multiple targets simultaneously, including low-flying aircraft and drones. To watch the Spider system engage, the launcher elevates, the simulated and the practice aerial target is locked. Keep your eyes on this Spider missile system. If you blink, you will miss. And that's a direct hit. We have a multi-layered air defense system where the enemy projectiles are shot down by a combination of surface-to-air missiles in the region. The letter claps thunder like a battlefield salute. Time now is for steel on the ground. भारतीय थल सेना की L-70 guns आपकी बाईं ओर।
इस मिशन में आप कुछ ही क्षणों में एक प्रैक्टिस एरियल टारगेट को अपनी दाहिनी ओर से आकाश में देख पाएंगे। इसकी पहचान इसके लाल धुएं की हवाई रेखा से की जा सकती है, जो कि आपके ठीक सामने 1 o'clock पे है। Requesting your attention towards your left, watch L-70 guns in action. And that's a correct hit. Let's hear it for Indian Defence Services. United in purpose, unstoppable in spirit. इतिहास साक्षी है कि किसी भी युद्ध में जब राष्ट्र शक्ति के संवाहक एकजुट होकर कार्य करते हैं तो दुश्मन का विध्वंस होना सुनिश्चित है, और यही युद्ध का सिद्धांत भी है। इंट्रोड्यूसिंग यू टू कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस, ओपनिंग फायर एट मल्टीपल फ्रंट्स, नो पॉज, नो पुल बैक्स, क्योंकि ये वो भारत है जो दुश्मन के घर में घुस के मारता है। जंग अकेले नहीं लड़ी जाती, इट्स अ सिम्फनी ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब जमीन और समुंदर पर हमारी फौज आगे बढ़ती है तो आसमां से कवर हम देते हैं। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस। बिफोर एंड व्हेन आवर ब्रेव सोल्जर्स फेस द एनिमी, द एयर फोर्स ब्रेक्स द एनिमीज स्पाइन। याद कीजिए ऑप सिंदूर। Their fighters, their transport aircraft destroyed in their hangars, their runways turned to dust. Operation Sindoor में हमने दिखलाया, दुनिया ने देखा। Defense analysis ने माना और reports ने कहा that over the enemy skies, the Indian Air Force held total dominance. Our aircraft will rain fire on the enemy bridges, command centers and crush their logistics nodes. इसे कहते हैं एयर इंटरडिक्शन। जब दुश्मन हमारे जवानों और समुद्री जहाज की तरह बढ़ते हैं तो हम बनते हैं उनकी एरियल शील्ड। Before the enemy can reach the border, we break their bridges, burn their fuel and choke their supplies. Battlefield airstrike means delivering firepower just inches ahead of our troops. सटीक निशाना, सुरक्षा हमारा वादा, और सिर्फ आग नहीं, हम ताकत भी पहुंचाते हैं। हमारे जहाज समुंदर से पहाड़ों तक हथियार पहुंचाकर दुश्मन के खेल को खत्म करते हैं। One target, one strike. धरती अंबर, सागर साफ, विजय रहेगी उनके हाथ। This is the fury of coordinated air operations. Based on intelligence about an enemy tank convoy, Indian Air Force will strike with a Hawk aircraft called Sign Khadak. Hawks, armed with rocket box to destroy the target, is located to your 1 o'clock at 2 kilometers. Look towards your left. High. Force aircraft is maneuvering for attack. And the second aircraft trailing behind number 1. Look towards your left, 9 o'clock high. Number 1 in dive. Enemy convoy is destroyed and supply lines are broken. Upon analysis of our ISR missions,
Indian Air Force has identified a vital logistics hub that needs to be targeted. Tasked for the mission are 2 MiG-29s, called sign Qatar. Armed with 500 kg bombs, they will be coming from left and shall be destroying the target, simulated in front of you at 2 kilometers. Look towards your left. High, 11 o'clock. The formation is rolling in for a dive. Number 2 flaring. Bombs gone. And that's a direct hit. Can we have a huge round of applause for our air warriors? हमारा अगला लक्ष्य दुश्मन का फ्यूल डंप. Formation of 2 Mirages, call sign Talwar. They'll be coming from your right to target a fuel dump which is located to your left at a distance of 2 kilometers. Look towards your right. High. Mirages are rolling in for the dive. Bombs gone. Direct hit. Number 2, bombs gone. And another direct hit. Target is totally destroyed. Indian Air Force further pushes the throttle of operations. We will now strike a vital bridge deep inside enemy territory. This task is now assigned to our mighty Su-30 MKIs, called sign Firangi. Su-30s will be coming from your left and target the bridge which is located to your 1 o'clock at a distance of 3 kilometers. Firangi was a long sword, primarily regarded as cavalry weapon, closely associated with the Maratha. Look towards your left. High. The Firangi formation is maneuvering for attack.